So f is equal to minus kx. Hmm. Now before I move ahead, मैं यहाँ पे 3 वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रिलेटेड टू SHM. Hmm. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ये जो वर्ड, इस 3 वर्ड से पहले ये जो स्क्रिप्ट x यूज किया है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि व्हाट इज x. Okay. दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Hmm. मीन पोजीशन. Hmm. देखिए, व्हेन आई से द वर्ड पोजीशन इट मींस फ्रॉम ओरिजिन, रेफरेंस Hmm. पॉइंट. Hmm. ठीक है, x इज नॉट फ्रॉम ओरिजिन. Right. ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. Right. एंड व्हाट इज मीन पोजीशन? सो मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है वेयर नेट force acting on body is 0. Then we have another word here, that is initial position, Hmm. that is t equals to 0. Hmm. And then we have another word which is origin. This is the reference point, Hmm. that is x equals to 0, y is equal to 0. So these are the 3 words, ठीक है, जिसको आपको differentiate करना होगा SHM. They Right. can be together, they Hmm. cannot be together, 2 of them might be together, Hmm. all the 3 can be together, or all the 3 are in different position. Hmm. Fine. Yes. So this chapter entirely lies on differentiating this, कि आपको Hmm. समझ में आ रहा है कि mean position, initial position and origin are 3 different words. Hmm. Now coming back, f is equal to minus kx. So acceleration को minus k by m into x लिखा जा सकता है. Hmm. So acceleration को minus omega square x, where omega square is k by m लिख सकते हैं हम. ओमेगा क्या है विल कम, मतलब विल डिस्कस इट अबाउट लेटर, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी बस हमने रिप्लेस कर दिया k by m को एक वर्ड ओमेगा से रिप्लेस कर दिया. नाउ आई जस्ट आस्क यू, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ a versus x? दिस विल बी सिंपली लाइक दिस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसे मैं एम्पलीट्यूड कह के बुलाऊंगा. Hmm. अंडरस्टूड? Hmm. ठीक है. सो दिस इज द स्लोप इज ओमेगा स्क्वायर tan theta. यदि आप, if this is theta, so tan theta here will be equal to omega square. Now Gurashish, suppose Hmm. हमारे पास एक पार्टिकल है, this is the mean position. Hmm. For convenience let's say this is origin also, मतलब mean position and origin are at the same point. Hmm. इधर की तरफ a है, इधर की तरफ माइनस a है. Hmm. ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. Right. लेट्स से इट इज एट सम पोजीशन, यहाँ से लेट्स से दिस इज एट सम पोजीशन x इक्वल्स टू x नॉट एट टाइम t इक्वल्स टू 0. ठीक है. और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं तो दिस इज एट अ डिस्टेंस x and 1. the time is t. Hmm. So you start of this is continuously the motion is undergoing, but you start observing it at t equals to 0. That is the initial position. Hmm. And at that point x is equal to x naught and time is t. Hmm. Fine. Yes. तो हम इस पार्टिकल के मोशन को, let's say I call this point as x Hmm. and this point as y. मैं इन दो पॉइंट x और y के बीच में इसके मोशन को स्टडी करता हूँ. Hmm. ठीक है. Let also me define the velocity as v naught at point t equals to 0, and let me define velocity as v at time t. Okay. ठीक है. So this equation I can write v dv by dx is minus omega square x. Hmm. So I can write v dv is minus omega square x dx. Okay. Integrate
integrate. Hmm. So when x is when I am taken x is equal to x naught, and when I take it as x, velocity at that point is something v, Yes. where v naught and x naught are initial position and initial velocity. Okay. Hmm. So this will give us v square by 2 from v naught to v minus omega square x square by 2 Hmm. x naught to x. Yes. This gets cancelled out. We have v square minus v naught square Hmm. minus omega square x square minus x naught square, or I can write as v square minus v naught square omega square x square Hmm. omega square x naught square. Hmm. So v square is equal to omega square x naught square plus v naught square minus omega square x square. Right. ठीक है. Hmm. So this v can be written as a square omega square minus omega square x square. अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने एक अज्यूम किया, ये क्यों अज्यूम किया ये भी मैं बाद में बताऊंगा. Here I have assumed that omega square x naught square plus v naught square is a square omega square. This is the assumption that I have made here. Okay. ये assumption मैंने क्यों किया है ये भी आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आ जाएगा. Hmm. Everything is mathematical, so just थोड़ा टाइम इस पे आपको देना पड़ेगा. मतलब मुझे let me complete this derivation उसके बाद. Hmm. तो this this v square, so I can write this v as omega बाहर आ जाएगा and this is a square minus x square. Hmm. This is velocity as a function of position. तो हमारे पास v जो आ गया ओमेगा a square minus x square आ गया. तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ dx by dt is omega a square minus x square. So this can be Hmm. written as dx upon a square minus x square under root is omega dt. Hmm. If I integrate this side, this will also be integrated. Yes. So when time is equal to 0, the Hmm. position is x naught, Hmm. and when the time is t, the position is x. So this again यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Hmm. dx upon a square minus x square under root is a standard function जिसका Hmm. इंटीग्रेशन होता है sin inverse Hmm. x by a. Hmm. ठीक है. तो बेसिकली ये इस चैप्टर में ही बस एक जगह यूज होता है, तो हम लोग इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इस फॉर्मूला को मैथ्स में, Okay. लेकिन ये सब फॉर्मूला आप ट्रिको कह रहे हैं इंटीग्रेशन में कर लेंगे. फाइन. Okay. Hmm. So this is sine inverse x by a from x naught to x, and this is omega times t. Hmm. So this is sine inverse x by a minus sine inverse x naught by a is omega t. Hmm. फिर हम यहाँ पे फिर से एक चीज लेट कर रहे हैं, लेट फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए. इसे भी हम बाद में इस वर्ड को लेंगे कि फाई का मतलब क्या होता है, ये भी डिस्कस कर रहे हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट. मैंने 3 जगह अजम्पशन लिया, एक यहाँ पे मतलब लेट किया है, एक Hmm. इधर लेट किया है. तो इन सबको Hmm. डिस्कस करना है हमें. ओमेगा का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब क्या होता है, ऑल दिस टर्म्स. ठीक है. ठीक है. So what we get here is sine inverse x by a is omega t plus phi. Hmm. So I get x by a is sine omega t plus phi. So I Hmm. get x is equal to a sine omega t plus phi. Hmm. It is an equation of SHM correlating time with position. So the Hmm. graph of x versus t. The graph of x versus t will be a sine graph. Hmm. स्टार्टिंग यदि मैं यहाँ पे फाइव जीरो लेके ड्रॉ करूं तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा. इफ आई डिफरेंशिएट इट, यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया Hmm. तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा dx by dt. Hmm. दिस विल कम आउट टू बी a omega cos omega t plus phi. हाँ. Right. Fine. So Hmm. I get
velocity versus time graph. For phi is equal to 0, I can make this curve as like this. Sorry, इस तरह से. This maximum value will be a omega और माइनस ए ओमेगा, दोनों मैक्सिमम है. जैसे यहाँ पे मैक्सिमम ए और माइनस ए हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस ए ओमेगा. राइट. फिर से यदि हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया गुराशीष, so I get acceleration as dv by dt, that is minus a omega square sine omega t plus phi. So again, the graph, if I have to draw this graph, that is acceleration versus time graph. For phi is equal to 0 if I am drawing, so this graph will look like this. This is minus a omega square and plus a omega square. Okay. Is it fine? Yes, sir. तो हमारे पास velocity as a function of x, velocity as a function of t, x as a function of t, a as a function of x, a as a function of t. ये सारे इक्वेशन हमने निकाले. मतलब if we will be asked to find out the position at a time t, we can do that. If we are asked to find velocity at a position or velocity at a time, we can do that. Right.